You're watching NewsX. I'm Rishabh Gulati. Let's head straight across to Uttarkashi, where the rescue operations are still continuing. They are continuing from every possible angle that one can think about. What you're watching on the top of your screens is the vertical drilling that has now commenced from the top of the hill, while the horizontal drilling, of course, has been underway. Remember, the metal obstruction in the drilling hole had led to the auger blades cracking. They have now been in the process of removing those auger blades, replacing them and restarting the operation. Depending on which angle of attack, and now there are three angles of attack that we are considering. 11 meters short was the original hole. They are going to have to get past this obstruction. The next 5 or 6 meters seems to be clear of any obstructions as per ground penetrating radar. Then the balance few meters will have to be done by hand, because there is a risk that the vibration of the machine causes further cascade failures, and we don't want more areas to, of course, collapse. The 41 people are safe, thankfully. Still, they're in better spirits. They now have a phone line which has been connected inside, so they can readily talk to the authorities and the rescuers outside, and to, of course, friend and family members. Attempts are being made to provide them with board games and some balls, bats, so that they can entertain themselves and keep in good spirits, which to their credit and heroism they've maintained thus far. My colleague Akshit is joining us on the broadcast. So Akshit, let's quickly start with the basics. The tunnels are now being done from how many points of angles? The original tunnel through the debris. Now the vertical tunnel, I'm being told, is started from the top of the mountain. What all attempts are being made now? Well, yes, the rescue operation is still on in full swing, and of course efforts are made to evacuate the 41 stranded workers from the portion of the collapsed tunnel where they are still stranded for 15 days now. And when we talk about the rescue operation, the efforts being made, then of course the first one being which is being kept on priority, then it's the horizontal drilling, which which there will be a manual drilling process after the auger is pulled out completely. And what we are picking up is that it's now 13 meters is still left to be pulled out, and after it is pulled out till tomorrow morning, that's what officials are saying, then the manual drilling process will start. And in the manual drilling, a team of 2 people will go inside the mild steel pipes, which have already been pushed till 46 meters. And of course, 10 to 11 meters is still left to be drilled through. And they will be, going inside that tunnel in the pipes with their cutters. The plasma cutters, of course, has been brought in from Hyderabad. It reached yesterday night, and then they will try to drill through that. And if I can just also show you some visuals right now, then you can actually see behind me that at this hour also the work is going on in full swing, in full action, because the efforts to rescue these workers is going, and the CM Dhami has also directed all the agencies to pace up the rescue efforts, because it's been long, it's almost 15 days that they have been stranded over there. And when we talk about the second option, which is a plan B, then if we just pan around our camera over there, then there you can see out of the tunnel the vertical drilling machine process is going on, and as per the latest which we have, that 17 meters has already been completed, and the total is 86 meters. So of course it's also a very long task, and the officials said that 2 machines will be used, because one machine can drill up to 40 to 50 meters. So of course 2 machines will be used, and he said that it will be completed within 60 to 70 hours, but as 2 machines will be used, so it might take longer, approximately 3 to 4 days, because that option is also being considered. But many experts have suggested that as we know, it's the shear zone, the soil is loose, it's quite fragile, so there is some risk also, and
the NDMA officials have also said that it is a zone where everything is unpredictable. So they are giving priority to the manual drilling, and of course it will be crucial to see at this juncture as to how the efforts are being paced up to rescue the 41 workers, because the impatience, the tension among them also is growing, and their family members also, because when we spoke to their family members also, then they have told that they are also telling the workers to not let their guard down. So of course it remains to be seen as to how they are evacuated safely. The good thing of course is, because there were already pipes running in the tunnel, that the communication could be established, the oxygen, food, water, that is now being done well. A phone line has been now put up. So other than the fact that they are trapped, they are being provided with facilities. But of course, the ideal situation is to get out. Now, as we mentioned, there's a plan A, there's a plan B. Plan A is just now 10-12 meters short. Plan B is just begun. We've heard a press conference today in which a description has been given that the drilling machine can do 15 meters a day. So it's going to take 4 or 5 days to do the vertical drilling if that's required, and that's of course if nothing else goes wrong, and things can go wrong, which is what the problem has been thus far. Dr. S.K. Wadia joining us on the broadcast. Dr. Wadia, now there is some good news and of course there is bad news. The good news is that because we've been able to have physical access, food, water and all sorts through a 6-inch pipe, everybody inside is safe. Medicines are available. They are in good condition and hopefully in good spirits now that they have a phone line also. But it is a complex operation, sir, and looks like it's going to still take a few more days. Certainly, because however, I would say that the option A is fine, and this will be success soon, because they are now doing manual drilling. And they are not the ordinary people, those are doing that kind of drilling. They must have hired a very skilled driller, those knows how to basically drill in such a very narrow passage, because they will not be having 3.5 feet only to work, to drill that and cut it that and give it out, bring it to back that. So, however, at the same time, the plan B, which they got success up to 17 meter right now, and totally 86 meter, and hope that this is also fine that, because however we know that all our shared zones are there, and the debris and boulders, and but no metal will come in when they will do from the top. No metal will come, as metal will come only when they will reach at the right top of the tunnel. Yeah. They must have messed this iron etc. there to stop basically to fall down the debris etc. So at that point of time, they will need to help to how to cut that mess, because if they will do cutting machines, so they may basically allow to debris etc. to fall down, so in the further portion also. Yes. So they have to prevent it. Yes. Those are the risk. The risk, of course, is that if you drill down from the top, you can cause further failures. And as you mentioned, sir, eventually there will be a reinforced shell. Now, what we're assuming is that in the collapsed part of the tunnel, it is a section of this reinforced concrete which has blocked the auger machine. So somebody is going to have to crawl in, I'm assuming with oxygen supply, crawl 40-50 meters into this very narrow pipe, where there's literally just room for one person to crawl, go in with a plasma cutter, then cut out the circular area, and that's a tedious task, then remove the debris physically, then come out, then resend the auger machine back in to go through, and they are suspecting that the next 6 meters there is no metal debris. So they should be able to do another 6 meters quite easily after that, but then you don't know, there might be further debris. So the last 10-20 meters is difficult, and from the top, regardless, is going to take 5 days before they come down. So Akshit, what do we now know about this particular metal debris? Have they now started going in? Has somebody managed to get in with a plasma machine and with oxygen?
As of now, no one has gone inside the mild steel pipes because still the auger machine is stuck. And as I told you that when the auger machine is completely pulled out, then only they will be going with the help of plasma cutters and of course the laser cutters which have been brought in from Hyderabad. DRDO Hyderabad has actually provided them. And as you were saying that it's a daunting task to actually go inside those pipes and make way for two more pipes to be pushed in because earlier, as we know, that GPR, which is ground penetrating radar, has also detected that there is no obstacle within 5 meters, but when the auger machine started to drill, then within 2 meters only the obstacle came in between and the operation had to be halted due to a technical snag. Of course, that's also a problem that if there is any kind of obstacle, then when the team of two people go inside those narrow pipes, then they will have to cut any kind of iron obstacle or metal obstacle. So that can perhaps take time. But if there is no obstacle, what is the attempt in removing the auger machine? How are they trying to reverse it out, or will they have to try to dismantle the machine, which is a complicated operation? Well, the auger machine, stands beyond repairable now, and they are now cutting the fins, the blades of the auger machine with the help of plasma cutter and the laser cutter, which has been brought in from Hyderabad. And also, the plasma cutter is, 35% more efficient than the other machines in cutting the blades and the fins. So, of course, that is being done to actually pull back the auger machine. And as we know, the Indian Army has also reached, so they are also assisting and helping. The engineering unit, the engineering regiment of the army from Madras has also reached, and they are also helping, in the whole operation. So, of course, it's a multi-agency rescue operation now, and it will be important to see as to how they are evacuated safely. Okay, we are about to see the biggest and longest rescue operation that I can remember. I'll leave a last quick word with Dr. Wadia. Dr. Wadia, now, like I said, the good news and bad news is it's been 15 days. 15 days is a long time. And luckily, yes, the men inside are still safe. They're healthy. There are no reports that we have, even though they're speaking to family often of anybody facing kind of illness. But you never know, it can happen at any point of time. But this has to be approached systematically. So there's no way of rushing it. You can't have too much vibration because that may cause a failure. You definitely cannot use explosives. So it's a very sensitive operation. You can't speed it up. It has to be done carefully and slowly. Exactly, because they're planning to use the blasting at from the end C, from the bird coat to make the drilling. But that will also make some kind of vibration, and that will also basically lead to landslide, etc. more. So the plan A is fine, and they should go with this plan. And I think, but they should keep open the plan B if nothing will happen in this. I don't think that if GPR they have used and they found that no more iron is there or such kind of load will not come. So they should do manually that kind of and plasma cutter will help them to basically go ahead. So here's the bottom line. The auger machine, which is yet another auger machine, has broken down and it is stuck. It is trapped most likely because of metal debris that it has come across. They are using the plasma cutters to cut out the fins of the auger machine so that it can be pulled out. Once it is pulled out, then they will go in and potentially manually dig a certain part of the last few meters before they get in and get these people out. More updates are coming from the site. Let's listen in. चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की इवनिंग पीसी में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे बताया गया था कि 2 बार हम पीसी करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, साथ में हैं एमडी महमूद सर, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार, डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ साहब। तो
आज का थोड़ा सा रिलीफ ये है कि जो आप लोगों को बताया गया था 2 बजे कि हमारा 13 मीटर बाकी है, उसके बाद में 2.96 मीटर 5:22 मतलब 5:30 बजे के अराउंड निकल गया था। उसके बाद 1.94 मीटर हमारा 7 बजे के आसपास निकल गया है। तो अभी जो बचा हुआ है ओगर के अंदर, जो टूटा हुआ ओगर है 8.15 मीटर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरीज आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई, तो उसकी वजह से तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं है, तो उम्मीद है कि जो काम चल रहा है उसी प्रगति से चलता रहा तो हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव साइन। तो अच्छा चल रहा है। समय सीमा अगेन फिर आप पूछेंगे, कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जैसे समय सीमा के बारे में कोई भी गैस या प्रिजम्पशंस की जाती हैं, वो सब एक जस्ट प्रिजम्पशन ही होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती। तो बट फिर भी जो पहले से आप लोगों को बताने का ये था कि जो पहले था उससे तकरीबन डबल स्पीड अब उसका हो गया है। तो ये तो है हमारा रिगार्डिंग जो ओगर का पार्ट फंसा हुआ है अंदर, जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। वर्टिकल वाला जो काम चल रहा है, मैं चाहूँगा एमडी सर को कि वो आपको एक इसके बारे में अपडेट करेंगे। हाँ, थैंक यू नीरज। नमस्कार। जैसे दिन में भी हमने बात की थी, जो SJVNL का काम है जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर्स ड्रिलिंग कर दी है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा, जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे। हमने इसके लिए 4 दिन का समय रखा है और आज 26 है, तो हम 30 तारीख का सोच रहे हैं कि ये इसकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाए। और इसका स्पीड पेस ठीक चल रहा है। हमें ज़्यादा अभी तक बाधाएं या कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक हमें कोई अड़चन वगैरह ऐसी नहीं आई है। उम्मीद रखें कि वो वैसे ही चलता रहे और हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। सर, फूड पाइप के बारे में एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे था, वो कितनी चली गई है? कई सारी रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर। एक्चुअल फिगर क्या है और कितना वो अंदर जा चुकी है जो कम्युनिकेशन लाइन के लिए सेटअप आप कर रहे थे या बाकी चीज़ों के लिए वर्टिकली? फूड पाइप देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमारा था ही पहले से। एक हमने 2-4 दिन पहले जो हमने ऑल्टरनेट फूड लाइन या लाइफ लाइन जो हम कहते हैं, वो हमने थ्रू किया। उससे लगातार हम फ्रेशली कुक्ड फूड पहुंचा रहे अपने साथियों को जो अंदर हैं, और कई किस्म के उसमें जो फल हो या रोटी, सब्ज़ी, दलिया सब पहुंचाया जा रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम स्टॉक भी काफ़ी कर रहे हैं। तो 10-12 दिन 15 दिन के लिए भी हम स्टॉक कर रहे हैं। तो रेगुलरली फूड पहुंचाया जा रहा है। अंदर सारे हमारे जितने भी वर्कर्स हैं सब अच्छे स्पिरिट्स में हैं और वो ठीक से हैं। जो भी उन्हें और कभी कोई कुछ खास कोई मांग करता है तो वो भी हम उनको पहुंचाते हैं। सर, वर्टिकल फूड पाइप, वर्टिकल जो आप ऊपर से आप कर रहे हैं ड्रिलिंग सर, उसमें जो 8 या 6 to 8 इंचेस वाली जो पाइप आप उसे डाल रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है सर? नहीं, वो देखिए, अभी हम बेसिकली उसको हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो SJVNL की जो पाइप जा रही है, उससे पहले ये एक छोटे डायमेंशन का पाइप जाए ताकि हमें स्ट्राटा का थोड़ा अंदाज हो। So what time will take this 8 meter auger machine pipe? जैसा आप लोगों को पहले ही बताया गया है, नो वी कांट प्रिज्यूम कि इतने बजे तक हो जाएगा, बट जैसा आपको दिन में था उससे 5 मीटर अभी तक हमारा बाहर आ गया है, 8 मीटर लेफ्ट है। सो वी कांट से कि 8 घंटे लगेंगे या 5-7 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे, बट वी आर होपिंग कि जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से जल्दी ही, मतलब अगर कोई और अड़चन नहीं आती है। जैसे एक पीस उन्होंने 3 मीटर का किया, 3 मीटर का पीस कट तो कर दिया, लेकिन अराउंड 30 to 45 मिनट्स उसको पुल करने में एडिशनल लग गए।
सो अगेन देयर आर डिफरेंट थिंग्स. उन्होंने मतलब दे ट्राइड कि ज़्यादा लंबा पीस कट किया जाए, तो उसका वेट ज़्यादा हो गया था, तो उसको पुल करने में लग गया. ऑन एन एवरेज वो एवरेज आउट हो गया. नाउ द लास्ट पीस विच दे हैड कट इज़ 1.94 मीटर्स. सो इफ़ यू प्रिज्यूम, तो आप इसके हिसाब से आइडिया एक लगा सकते हैं, लेकिन वो जस्ट ए टेंटेटिव आइडिया होगा, बट उससे 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकता है. दैट इज़ वट लाइक वी आर होपिंग. हाँ जी. जो कौन सा 6 से 8 इंच वाली जो और पाइप वर्टिकली जो आप कर रहे हैं, वो वर्टिकली जो ऊपर से जो है वो कितनी डेप्थ तक गई है. सर ये पाइप भी कहा जा रहा है, मतलब सर उसमें जो वर्टिकली आप जिसको वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं 90.2 मीटर, जैसे वो लाइफलाइन के तौर पे. नीरज सर एक जो इसमें कंफ्यूजन है लोगों में सभी में कि 1.2 डायमीटर का एक वर्टिकल हम कर रहे हैं. हाँ जी. हटके भी कोई दूसरा वर्टिकल ड्रिल कर रहे हैं. वो कितना वो मैं जैसे बताया अभी, आई थिंक मनीष ने पूछा था शायद, तो मैंने बताया कि वो हमने कुछ पहले उसका शुरू किया था ताकि हमें पता चले कि वहाँ का स्ट्राटा कैसा है. कोई हम क्योंकि बड़ी मशीन लगाने वाले हैं, 1.2 डाया का हम ड्रिलिंग शुरू करने वाले थे, तो हमें पता चले कि स्ट्राटा कैसा है, कोई सरप्राइजेस नहीं आ जाए, तो पहले से हम तैयार रहें. जैसे पानी वगैरह कभी ये आता है तो अलग किस्म के आ सकते हैं हमें कोई चैलेंजेस, तो उसको हम गेज करने के लिए वो लगाए थे. तो उसका काम चल रहा है, वो भी 60-70 मीटर लगभग हो गया है, तो पता चलेगा उससे. चलिए, थैंक यू सो मच. मैनुअल का कब होगा जब ये ऑगर वाला कट जाएगा, उसको तब स्टार्ट करेंगे? जैसे मैनुअल वाला ओगर निकलना कंप्लीट होगा, तो हो सकता है लास्ट पीस जो होगा वो किस चीज़ में अटका हुआ है, उसको कितना टेंगल इंटेंगल हो रखा है, हो सकता है उसमें कुछ सरिये अड़े हों जिसकी वजह से वो सारा का सारा ये जो बीच में दिक्कत आई है उसका हम नहीं कह सकते उसमें 2 घंटे लगें 4 घंटे लगें. वो जब सब कुछ निकल जाएगा देन वी हैव टू अगेन सी कि पाइप का, जैसे पिछली बार था पाइप का फेस डिफॉर्म हो गया था, जो पाइप का फेस डिफॉर्म हो गया तो हमें पाइप काटना पड़ा था 1.2 मीटर. तो वैसी स्थिति तो नहीं है, तो एक बार पहले हमें फाइनली वो देखना पड़ेगा. जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद देन मैनुअली वी विल गो, कि मैनुअली जैसे आपको दिन में भी एक्सप्लेन किया था कि जो डिगर्स होते हैं, जिनको जो खोदने वाले होते हैं उनको खोदू बोला जाता है, कि वो खोदते रहते हैं लाइक ए रेट माइनर्स आल्सो, सो दे आर नोन फॉर इट. तो वो तकरीबन एक नियरली 1 हैंड लेंथ मान के चलिए, जो जितना बाहर निकाल सकते हैं अप टू एल्बो, थोड़ा सा उससे आगे, तो 1 से 1.5 फीट के अराउंड वो क्लियर करते हैं. वो क्लियर कराएंगे, उसको पुश करके देखेंगे. इन केस अगर पुश होने में कोई कठिनाई होती है, क्योंकि जो पाइप है लास्ट पुश उसका तकरीबन 55-60 घंटे पहले हुआ था. कई बार ऐसी स्थिति आती है कि वो पाइप माइट हैव टेकन सम शेप, जो उसके आसपास की चीज़ों में उनमें फिक्सिंग हो गई है, तो उसके लिए भी देर आर लाइक अल्टरनेट्स. जो अभी एक्सपर्ट्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी इवनिंग में, सेक्रेटरी सर ने जो लिया था, उसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर हम बेंटोनाइट भी डाल सकते हैं, किसी ने कहा मोबिल कर सकते हैं. सो दैट विल बी एटलीस्ट जब स्थिति आएगी उस कंडीशन, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसमें क्या किया जा सकता है, वो रात को जिस टाइम भी होगा, कल अर्ली मॉर्निंग होता है, तो उसको एक्सप्लोर किया जाएगा. और अगर वो पुश नहीं होता है, इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो पुश नहीं हो पाता है, तो जैसे बताया था 700 mm वाला एक ऑप्शन है. अदरवाइज एक अल्टरनेट ऑप्शन भी किया गया है, जैसे आप लोगों ने दिन में पूछा था, आर्मी के इंजीनियर जैसे जो दूसरा एक ड्रिल पे उस पर ड्रिफ्ट पे काम कर रहे थे, उन्हीं की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इन केस अगर इसी 800 mm की ड्रिफ्ट मानते हुए ये सर्कुलर ड्रिफ्ट होगी, वो हमारा रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट था, इसको सर्कुलर ड्रिफ्ट मानते हुए दे हैड प्लान कि अगर एक पाइप को 3 पीस में काट के उनको अंदर जा करके जोड़ा जा सके, देयर आर सम मटेरियल जो स्टिक कर देते हैं, तो दे आर एक्सप्लोरिंग इट. सो बट वी कांट से कि एग्जैक्टली, सो वी हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जो जैसी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आवर टीम्स विल रिस्पॉन्ड. एंड जैसे आपको बताया सभी टीम्स के अंदर कोऑर्डिनेशन है, आर्मी इंजीनियर्स अपना काम कर रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट पे कर रहे थे, उन्हीं को रेक्टेंगुलर ड्रिफ्ट के साथ में, बिकॉज दे हैव एक्सपर्ट्स फॉर दैट, उन्हीं को टास्क दिया कि सर्कुलर ड्रिफ्ट भी अगर कल मान लीजिए कल स्थिति आती है और नहीं हो पाता है पुश, तो सर्कुलर ड्रिफ्ट भी वो बनाने के लिए अपना काम शुरू कर चुके हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल द प्रोबेबल जो भी केसेस हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव ऑल द प्लान्स रेडी. थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.